प्राकृतिक परिसंस्थान को परिपृष्ठ प्राणवंत करी रखिया पई परिष्कृत और प्रकृष्ट परिवेश प्रदान करिबारे वन्य प्राणी मानकर आवश्यकता अपरिहार्य। आउ यह मनुष्य बुझिबा सह वन्य प्राणी को सुरक्षा करिबार आवश्यकता रहिछि। एही परिप्रेक्षी आज भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह उत्सव पालन करा जायछि। एही उत्सव मुख्य अतिथि भाव माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक भर्चुआल माध्यम जोग देइथिले। एहा सह जंगल विभाग मंत्री श्री प्रदीप कुमार रमात अतिथि भाव जोग देइथिले। यह अवसर में जयदेव भवन ठारे एक वन्य प्राणी और जंगल परिवेश संपर्कीय फटोचित्र और चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित करा जायथिला। कार्यक्रम आरंभ में प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक तथा मुख्य वन्य प्राणी तत्वावधारक श्रीजुक्त सुशील कुमार पोपली यह उत्सवर पालन उद्देश्य और वन्य प्राणी संरक्षण और सेमानकर आवासस्थल अभिवृद्धि पर सरकार का विभिन्न कार्यक्रम संपर्क में सूचना प्रदान करथिले। यह सह जंगल और वन्य प्राणी सुरक्षा रे उल्लेखनीय अवदान पर विशिष्ट व्यक्ति मानक चलित वर्ष राज्य स्तरीय विजु पट्टनायक वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार द्वारा सम्मानित करा जायथिला। आपलो तो निजे हमर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सुनले वी नीड को एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ए पे हमको चेष्टा करिबा पड़िबो कि सेमाने भी भलोरे रहंतु आमे भी भलोरे रहंतु। से पय आमे जो प्रोटेक्शन पय जेमते ऑनरेबल सीएम कहले हमर गोटे इको टूरिज्म मॉडल दैट इज द one of the best, or rather I should, there is unparalleled ecotourism model of our state in the country. जोटी कि हमें 100% रेवेन्यू जो जनरेट हो सेटा दैट गोज बैक टू द पीपल। सेकेंड इज हमें जो अपनों को कहली गज साथी अनदर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन जोटी कि हमें आम जो लोकल विलेज बेस्ड कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन संरक्षण समिति कि ईडीसी रही कि और अदर लोकल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज से माने 5टा लोक को साइड सेलेक्ट करके दियंती जाकू हमें अक्टोबर मसीह नहीं कि फेब्रुआरी पर्यंत एंगेज कर रखुचु से माने आम इंटरफेस वर्क एज अ इंटरफेस बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द विलेजर्स इन अलर्टिंग द विलेजर्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स and also to the forest department so that forest department sends the enforcement. Third community based intervention which we have taken again for the protection and conservation of the wildlife is Jan Suraksha Gaj Raksha, wherein we provide 90% subsidy. We go in for solar fencing wherein 90% of the cost is borne by the government and 10% is contributed by the villagers. Now coming to the habitat improvement, कॉरिडोर को मूवमेंट पाथ रोचे प्रोटेक्शन करबा पाई वी हैव टेकन अ कॉल एटलीस्ट 50% ऑफ द स्पीसीज बीइंग प्लांटेड इन आवर फॉरेस्ट एरिया विल बी द फॉडर स्पीसीज विच आर प्रिफर्ड बाय द एलिफेंट्स। सेकेंड थिंग इज वी आर गोइंग फॉर लॉट ऑफ वाटर बॉडीज आम जो पुराना वाटर बॉडी रहा रिनोवेट करूँ नुआ वाटर बॉडीज ऑल्सो वी आर डूइंग। अनदर इंटरवेंशन विच वी आर डन इज दोज आर द फर्स्ट इंटरवेंशंस इन द स्टेट आफ्टर many years. We have declared conservation reserve, 2 conservation reserves. One conservation reserve, Bhrutang Conservation Reserve in Nayagarh Jilla, and another we have declared is government has declared is Simlipal Kuldia Hadgar Conservation Reserve. The basic purpose rahila to protect the elephants and other wild animals which are moving from one sanctuary area or one protected area to another area. Apart from them, to ensure enforcement measures. Setire, as you all are aware, our government has been kind enough to provide protection to the forest officials. Agar forest officials in discharge of their duties, some offence is committed, suppose firing karla bede, some injury happens to a suspect or some injury happens to the accused, or even if there is a casualty, no prosecution will be done, no arrest will be done without an executive magistrate inquiry. A magistrate inquiry se mane kaun dekhibe the use of arm was whether unnecessary, excessive or unwarranted. Seta hela pare once the executive magistrate gives a report, government accepts that, then only action can be taken. This is a sort of a protection given to the forest officials which will help them in discharge of their protection duties. Apart from recently, about a week, not even a week, few days ago, government in home department, of course with the approval of honorable CM, has allowed all our senior forest officers who are in the field in charge of our forest circles to get access to call detail records and also live tracking of suspects, live tracking of mobile of the suspects or the accused who have committed the forest offence or the wild offence. However, this will be given access to by the concerned SPs to the officers on getting a requisition. This is going to really change the game. This provision was not made available to us. It was not available to.
We were doing without using the technology. This is now the technological intervention. Mobile tracking, today I'm sitting here. If the prosecution authorities want to track my location, they'll immediately track where my mobile is running. If I switch off, that will be the last location. So earlier what we were doing, we were physically keeping our informants, say mane khabar dele, then we'll go it. Now this will be, we know the suspect, our mobile number hele, we can track them through this provisioning. Another thing we have done is, another thing to strengthen the prosecution is, as you all know, we have created one special task force, joint task force exclusively for Simlipal, wherein 100 forest personnel and 100 police armed constabulary has been deployed. There's about 200 people who are now working in Simlipal Tiger Reserve area for protection of tigers, because that's the main source population in the state. Due to ki tiger bahari kari, even Hadgad, Ghatga, apne jani thibe, Ghatga today we have a presence of tiger. It has come from Simlipal area. So we have gone in for joint task force. And the major decision, other decision we have taken is just merely providing them the power to use the arm is not sufficient. We should ensure proper training to them on use of firearms and also for maintenance of arms. That also decision has been taken at the Chief Secretary level, wherein all senior police officials and the forest officials from our home department as well as from the forest department present. And it is going to be a periodical feature when we'll have the forest personnel provided with the arms training on use of arms and also for maintenance in all the training facilities of the police department available in Bhubaneswar. Like as you know, Biju Patnaik Academy, Police Administration Academy has a firing range facility. Districts, almost all the reserve inspectors have that facility. So we are already into that. Already 4-5 training hame Biju Patnaik Academy of Police Administration में हमें करी सरी. So these are broadly we have taken the measure, and as you all know, कितने फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रेनिंग नहीं चल रही बंदूक चलना. एबे सुधा 15 रो बैच से करी करी we have already imparted training to 60 and another 30 is undergoing 90. But we have a target of, we have something like, if you take the field staff, guards, foresters put together maybe about, and range officer, deputy ranger and ranger put together maybe about 7,000 plus. So over the period of time. No. अगर पूरा राज्य रे हमर total forest officers कई बार गले from guard up to the rank of PCCR we may be about 9,000 plus. सेटा को कैटेगरी रो ऑफिसर को दिया जाउछि. नहीं एबे जो को कैटेगरी एटी सिटी गोटे निष्पत्ति न्यायालय, as I told you, police पाके भी limitation आछि with regard to infrastructure for providing arms training. Then we took a decision again at the Chief Secretary level that initially we'll concentrate more on the wildlife areas, wildlife division, and within the wildlife divisions, government took a call. Let's first go in for training from your Mayurbhanj district and Angul district. And that is how we have started this. आज वन्य प्राणी सप्ताह अवसर रे 69तम वन्य प्राणी सप्ताह अवसर रे ये जो कार्यक्रम कराई कार्यक्रम रे विशेष भाव रे किभଳି भाव रे आमे वन्य जंतु को सुरक्षा दे पारिबो एवं सरकार कौन सब कार्यक्रम नहीं ग्रहण करछन्ति से संपर्क अवगत करने सहित आम साधारण जनता कहीं सामिल करिवार जो कार्यक्रम रही से कार्यक्रम रे आम जहाँ परिचय एवं साधारण जनता जो भाव में संपृक्त होती एवं ग्रामांचल जो मैंने जंगल सन्निकट अंचल बसवास कर आर्थिक उन्नति राज्य सरकार जो सब कार्यक्रम नहीं से संपर्क में आलोचना होती विशेष भाव में आज दिन में आमर प्रिय मुख्यमंत्री जे संपूर्ण भाव में वन्य प्राणी प्रति दया सब समय रही से वन्य जंतु कौन प्रकार जदि क्षति घटे से कहे मर्माहत होती एवं आज दिन में नंदनकानन उन्नतिकरण 1500 हेक्टर जमी दारुठेंगे नंदनकानन सहित संजोग कर प्रिय मुख्यमंत्री एवं वर्ल्ड क्लास जू करने प्रिय मुख्यमंत्री निर्देश देते एवं कहीं सीधा सड़क कहते अर्थर बाधक ना जहाँ खर्च हो किंतु नंदनकानन को गोटे वर्ल्ड क्लास जू रे परिणत करंतु एवं यार उन्नतिकरण कर समस्त कार्यक्रम आम चली कोचिंग प्रतिहत करने आपण मैंने जानती आम पुलिस फोर्स सहायता नहीं पुलिस फोर्स सहायता आम जंगल विभाग कर्मचारी माने जंगल विभाग कर्मचारी एवं आमर पुलिस फोर्स जॉइंट वेंचर मिलित भाव में आम
से कार्यक्रम जारी शुणु कुम्भीर मान कुम्भीर दायु जनसाधारण को रक्षा करने आम प्रत्येक स्थान आम गोटे बाउंड्री कर देचु एवं तार जाली देकी से एरिया भितर जनसाधारण व्यवहार करेंगे बाहर व्यवहार करेंगे ना से आम पदक्षेप नहीं एवं कोटी कोटी टंका सेवा अवदान सर